Hello everyone. Before we begin, let me introduce myself briefly. I am Jamshed Sheikh, CS22. Our team member name is Piyush Chandrastogi, Divya Gupta and Kumari Jyoti. Now this presentation is going to presented by Figma team and presented to our respected sir Mr. Diwakar Yogasen and Mr. Rudrendra Singh. प्रेजेंटेशन के मेन पॉइंट्स को समझने से पहले हम पहले प्रेजेंटेशन की आउटलाइन को समझ लेते हैं। तो पहले नंबर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि WannaCry रैंसमवेयर क्या होता है, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि आखिर में रैंसमवेयर क्या होता है और जो रैंसम की पेमेंट होती है वो बिटकॉइन में होती है। तो बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट को भी हम इसमें समझेंगे। देन बात करेंगे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, देन बात करेंगे हाउ इट वर्क्स एंड लुक कि WannaCry जो रैंसमवेयर है हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद कैसे वर्क करता है, आखिर में कैसे पॉपअप शो होते हैं। देन बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ WannaCry रैंसमवेयर एंड द लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट आर सेफ्टी प्रिकॉशन कि अगर हमें किसी प्रकार के वायरस से बचना है, चाहे वो रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, कोई भी वायरसेस हो, हमें अगर उससे अटैक से बचना है तो ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो स्टेप्स हमें फॉलो ही करने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। Hello everyone, myself Kumari Jyoti from CS22, roll number 95. Firstly, I will talk about introduction of ransomware. What is ransomware? Ransomware is a malicious software that infects your computer and displays messages demanding a fee to be paid in order for your system to work again. This malicious software has ability to lock your laptop, computer, screen or encrypt your data files, predetermined files with a password. Good afternoon to all of you present here. Today I am Piyush Rastogi of section CSC22 is going to explain this slide and the topic is what is WannaCry ransomware. तो चलिए शुरू करते हैं। WannaCry ransomware is an example of crypto मतलब कि ये एक टेक्निक होती है इंफॉर्मेशन या डेटा को सिक्योर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सम कोड्स सो दैट कि बस वही पर्सन उस डेटा को देख या समझ सकता है जिसके लिए कोड किया गया हो। एक तरह से इंक्रिप्शन ऑफ डेटा या फिर इंक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। WannaCry रैंसमवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। जब ये आपके सिस्टम में आ जाता है तो ये सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है और आपके सिस्टम में जितने भी इम्पोर्टेंट फाइल्स या डेटा हैं सभी डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और वो उसमें अपना एक्सटेंशन डाल देता है। जैसे .pdf या .zip या .txt फाइल होता है वैसे ही WannaCry में WNCRY का एक्सटेंशन होता है। ये एक कंप्यूटर वॉर्म है मतलब कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करता है और पेमेंट्स की डिमांड करता है और वो पेमेंट वो बिटकॉइंस में डिमांड करते हैं। इस मैलिशियस सॉफ्टवेयर से 150 से ज़्यादा देशों में 2 लाख से ज़्यादा विक्टिम्स और 2,30,000 से अधिक कंप्यूटर अफेक्टेड हुए थे। तो ये था WannaCry रैंसमवेयर। अब हम बिटकॉइन को अगले स्लाइड में समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। Hello everyone, myself Divya Gupta. Bitcoins. Bitcoin is a digital and global money system currency. Launched in 2009, Bitcoin is the world's largest cryptocurrency by market cap. Bitcoins can't be printed and their amount is very limited. Only 21 million Bitcoins can ever be created. Bitcoins is a decentralized peer-to-peer network. No single institution or person controls it. Bitcoin is first introduced as an open source software by an anonymous programmer. Bitcoins was invented by Satoshi Nakamoto. Now we are going to discuss how WannaCry ransomware was created. WannaCry used the Eternal Blue exploit and double pulsar backdoor developed by the US National Security Agency to spread through local networks. And then we talk about Eternal Blue exploit. It is a cyber attack exploit developed by the US National Security Agency. It was leaked by the Shadow Brokers hacker group on April 14, 2017. If we talk about Double Pulsar is a backdoor implant tool developed by the US Aquarian group that was leaked by the Shadow Brokers in early 2017. Double Pulsar run in kernel mode, which grants cyber criminals a high level of control over the computer system. Everybody think how WannaCry ransomware works. Point to be known. First point, attackers use unregistered domain and there was a condition that if request is failed from the domain then malware will be executed from computer to computer and use the system as a botnet. And second point, when executed the WannaCry malware first check the kill switch domain name. If it is not found then the ransomware encrypts the computer data then attempts to exploit the SMB vulnerability to spread out to random computers on the internet and literally to
computers on the same network. And third point, as with other modern ransomware, the payload displays a message informing the user that files have been encrypted and demands a payment of around $300 in Bitcoin within 3 days or $600 within 7 days. Computer screen after attack. A pop-up was appeared when the WannaCry virus somehow installed in our computer, as shown in screen. What happened to my computer? हमारी important files, photos, videos, databases and other files are no longer accessible because they have been encrypted. Can I recover my files? Yes. If we want to decrypt all our files, then we need to pay. We have only 3 days to submit the payment. After that, the price will be doubled. Also, if we don't pay in 7 days, we won't be able to recover our files forever. How do I pay? They tell about the payment mode, that is Bitcoins. I discussed about Bitcoins before. They also provide link for contacting them. On the screen, we can see the time counter for 3 days and for the 7 days. WannaCry ransomware also install text file like this. जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सी ड्राइव में होता है. ये WannaCry ransomware भी हमारे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में इंस्टॉल हुआ था. इसकी वजह ये है कि जितने भी हमारे फाइल्स डाटाबेसेस होते हैं वो सी ड्राइव में स्टोर होते हैं और ये वायरस यहाँ से उन्हें आसानी से उन्हें इनक्रिप्ट कर देता था. Our important files are encrypted, but now we are unable to decrypt the files because our computer antivirus removed the decrypt software, which will be used to decrypt the files. Now to decrypt the files, we have to run the decrypt software. For this, we have to find an application file named WannaDecryptor.exe, which will be present in the hidden folder or it will be restored from the antivirus quarantine. Antivirus quarantine is a place where antivirus put all the infected files, so we have to restore the file from here. If this exe file does not exist, then we have to download the software from the address they provided. Now the background of our desktop is look like this after infection. Now again I am here to explain the slide of what was the effect of WannaCry ransomware. So जो फर्स्ट केस था या जो फर्स्ट अफेक्ट था वो एक स्पेनिश मोबाइल कंपनी में हुआ था जिसका नाम था टेलीफोनिका. On 12th of May, thousands of hospital, blood storage and surgeries were affected by this ransomware attack across the UK. This system affects the working of computer system and MRI scanners used in the hospitals, banks and theater equipments, etc. Business of large company were closed due to this WannaCry ransomware. और तो और गवर्नमेंट एजेंसीज भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे. जैसे ये रैंसमवेयर यूरोप से बाहर फैला, करीब 150 कंट्रीज़ में कंप्यूटर सिस्टम क्रिपल्ड हो गए, मतलब यूजलेस हो गए, अफेक्टेड हो गए, अपंग हो गए. ये था इस रैंसमवेयर का इफ़ेक्ट. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. अगर कोई पर्सन पेमेंट ना करे तो क्या होता था, चलिए इसको जान लेते हैं. अगर कोई विक्टिम $300 पे नहीं करता था तो वो मनी को इंक्रीज़ करके $600 कर देते थे. अगर कोई विक्टिम टाइमली पेमेंट नहीं करता था तो हैकर्स कहते थे कि योर डेटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम योर सिस्टम, मतलब जो आपका इनक्रिप्ट डेटा है वो आप हमेशा के लिए लॉस्ट कर देंगे, खो देंगे. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज गोइंग टू एक्सप्लेन बाय कुमारू ज्योति. Now, I'm discuss about who stopped the WannaCry and how. So, Marcus Hutchins, perhaps best known by Malware Tech, stopped the WannaCry. He says, I am definitely not a hero. I am just someone doing my bit to stop botnets. Now, what is botnet? Botnet are networks of computers infected by malware, such as computer viruses, keyloggers, and other malicious software, and controlled remotely by criminals, usually for financial gain or to launch attacks on websites or networks. And how? Hutchins said he stumbled across the solution when he was analyzing a sample of the malicious code and noticed it was linked to an unregistered web address. WannaCry included code that looked to check if a specified domain had been registered. If it received a response from the domain, it shut down. If not, it continued to work. When executed the WannaCry malware first checked kill switch domain name. If it
found, then the ransomware not encrypts the computer's data. If it found, then encrypt the data. So he promptly registered the domain, something he regularly does to discover ways to track or stop cyber threats, and found that stopped the worm from spreading. So he bought it in just $10. Value of $10 at that time in US is 600 rupee. And that effectively activated a kill switch and ended the spread of WannaCry. Now in this slide, we are going to know about how to protect yourself from ransomware. And first point, update your software and operating system regularly. Next, do not click on suspicious link. And next point, never open untrusted email attachment. Next point, do not download from untrusted website. Next point, avoid unknown USBs. Use a VPN when using public Wi-Fi. Install internet security software. Install antivirus. And the last point is very important, backup your data. And thank you.